और आपने देखी हेडलाइंस और अब खबरों की डिटेल्स और सबसे पहले नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर। जी हां, इजराइल और गजा के बीच में हमास के टेररिस्टिक अटैक के बाद जंग छिड़ गई है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है कंप्लीट सीज गाजा स्ट्रिप पर हमास फाइटर्स के अनप्रेसिडेंटेड इनकर्शन के बाद इजराइल में, जिसके बाद इजराइल ने फॉर्मली डिक्लेयर कर दी है वॉर कल संडे के दिन और दी है ग्रीन लाइट सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स की तरफ, जो कि रिटेलिएशन भी है हमास के खिलाफ। जब हमास ने किया है सरप्राइज अटैक जिसमें मारे गए हैं 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं अभी तक और कई हज़ार ज़ख्मी हुए हैं दोनों साइड्स पर। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट आई है जब इजराइल की मिलिट्री स्कोर भी कर रही है इजराइल के साउथ रीजन में रिमेनिंग मिलिटेंट गार्डेड ब्रीचेस और सदर्न बॉर्डर फेंसेस को लेकर, जो कि तबाह हुए हैं गजा की साइड पर से एयर रेड्स के दौरान। डिस्ट्रॉयड कार्स और एरियाज और स्ट्रीट्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है रॉकेट अटैक्स के बाद। इजराइल और गजा के बीच में हमास के टेररिस्टिक अटैक के बाद जंग छिड़ गई है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है कंप्लीट सीज गजा स्ट्रिप पर हमास फाइटर्स के अनप्रेसिडेंटेड इनकर्शन के बाद, जिसके बाद इजराइल ने फॉर्मली डिक्लेयर भी कर दी हुई है वॉर कल संडे के दिन से और दी गई है ग्रीन लाइट सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स की तरफ से, जो कि रिटेलिएशन भी है हमास के खिलाफ। जब हमास ने किए हैं सरप्राइज अटैक जिसमें मारे गए हैं 1100 से ज़्यादा लोग और कई हज़ार ज़ख्मी हुए हैं दोनों साइड्स पर, जबकि अब भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं रिट्रीव करने का आईडीज़ पार्टी गोअर्स के, जो कि थे अटैक के समय मौजूद गजा बॉर्डर पर। Nick Roberts. There's a lot that we can see from here very quickly. Gaza's just over there. A few miles away, you can see the smoke rising. We're seeing multiple impacts over there in Gaza. But I'm going to ask John to spin the camera around now on these vehicles here. There's a situation about to develop here. Now, the people here pulling the bags from the vehicles are volunteers getting the identification documents of all those young partygoers who were at the party. This is where they were shot up. All these vehicles were shot up. The soldiers here come over to make sure that these people have authority to do what they're doing, literally smashing the windows here. I mean, this is unfolding around us here right now. But these people, it's okay. It's okay. Not okay. Okay. Not okay. Okay. It's not okay. Okay. We're not explaining. okay. We're explaining. Okay. No, Thank don't you. talk to me like this. It's not, you can see them like this. What is it? They're collecting the documents. It's okay. Thank you. Not about collecting. Why Yeah. broke the window? What's the reason? Well, this is up to him, not me. I'm not involved in that. So this is an unfolding situation as we talked about there. Passions, as you can see, are really high and with really good reason, because this is where those young people had parked their vehicles for that party on Friday night, Saturday morning. And this is where they rushed back to when Hamas raced in here to start killing them. And this is where they were shot up. And you can see car after car after car after car here. We see their bags being taken out, but we've seen documents lying at the side of the road. It's confusing and active situation. There are soldiers here, there are angry and upset civilians, there are volunteers taking the documents away. But look up here, more and more of these vehicles, and it just really gives you that sense and understanding of the horror of the moment when in the early hours of the morning, suddenly the partygoers found themselves being attacked by Hamas, brutally murdering them. We've listened to testimony of doctors who've treated some of the wounded and the dying, and they were trying to escape. They were trying to get away. It's hard to overstate the horror of what was happening here, but you only have to look at the way the vehicles are parked, the way that you can see people are trying to throw themselves in to drive away here in desperation and just cut down, and the situation unfolds further down the road here. More shot up and destroyed vehicles as more of the partygoers were trying to leave. But I can tell you the situation here is very dynamic, it's very fluid, it is changing. And as we've been driving in here just to get to this spot, we passed an area where Hamas fighters
terrorists were shot and killed by Israeli defense forces. Their vehicles are lying at the side of the road. Their bodies are still lying at the side of the road. And we've also seen the biggest deployment that we've witnessed so far of Israeli military defense forces with tanks, howitzers, armored personnel carriers deployed out in the field, dozens and dozens of them. That's the biggest deployment that we've seen so far. And while we were driving down here, we've seen a lot more. आपने देखी CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट निक रॉबर्टसन की रिपोर्ट, वो हमें डिटेल्स दे रहे थे सिचुएशन के एरिया में से। और अब इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने भी टारगेट किया हुआ है अशाती और जबल अली रेफ्यूजी कैंप्स को पैलेस्टीनियन साइट पर। और एक बार फिर हमास ने इशू भी कर दी हैं न्यू वार्निंग्स, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार मारे गए हैं अब तक लोग और उनकी तादाद काफ़ी लार्ज नंबर्स में बताई जा रही है पैलेस्टीनियन साइड पर। और इस समय पैलेस्टीनियंस खड़े हैं इन द मिस्ट ऑफ रबल, जिसके विजुअल्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। जब मुसलसल इजरायली एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, कुछ देर पहले उन्होंने हिट किया है नियर बाय एरियाज़ को जबल अली में, जो कि है नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। इमरजेंसी वर्कर्स मौजूद हैं सीन पर, जबकि हमास का कहना है कुछ देर पहले उन्होंने ऐलान किया है कि अगर नहीं रोकी गई गोलाबारी इजरायली साइड से तो वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे हॉस्टेजेस को।